children, today let's start with chapter number 2, interior of the earth. So let's study about the interior. We have different layer. We have crust, mantle and core. Core has been divided in two parts, outer core and inner. So our planet earth, seemingly solid and unchanging, is a complex entity with a multifaceted interior. So the mysteries of what lies beneath our feet can only be unraveled through indirect evidence, जैसे mining activities, gravitational studies, geological phenomena like earthquake and volcano. जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ है वो क्या है, एक अनचार्टेड रेलिम है, as reaching it as a insurmountable challenge. So earth layered structure. So let's study about the three layer, crust, mantle and core. First is crust, outermost layer है जिसको हम crust कहते हैं, thinnest है, least dense है, and it is characterized by its brittleness. The thickness of crust varies depending upon whether it's beneath the ocean or continent. Oceanic crust is notably thinner, measuring only about 5 km, while continental crust extends up to 35 km. In areas of intense mountain building process like Himalaya, the continental crust can be thick as 70 km. So the crust is composed of two layers, upper crust and lower crust, जिसमें मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, और कॉन्टिनेंटल crust में जैसे आपके सिलिका और एल्यूमिनियम. वहीं अगर हम बात करें जिसे हम सियाल कहते हैं, ओशनिक क्रस्ट में आपके सीमा, दैट इज सिलिका एंड मैग्नीशियम. नाउ मेंटल, व्हिच इज लोकेटेड बीनीथ द क्रस्ट, इट एक्सटेंड्स अप टू डेप्थ ऑफ अप्रॉक्सिमेटली 2900 किलोमीटर. डेंसर देन क्रस्ट है. इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू रीजन, अपर एंड लोअर मेंटल. अपर मेंटल वीकर जोन है जिसे हम एस्थेनोस्फीयर कहते हैं, जो एक्सटेंड करता है टू द डेप्थ ऑफ about 400 किलोमीटर. मैग्मा और molten rock material originate during volcanic activity. Together, the crust and the uppermost part of the mantle is referred to as lithosphere. इसको जो thickness है वो रेंज करती है 1 to 10 to 200 किलोमीटर. ये आपका solid state में होता है. वहीं हम core की बात करें, ये innermost layer है. It happens with the thickness layer. Core is subdivided into outer core and inner core. जो outer core होता है वो liquid state में होता है, inner core solid और extraordinary dense होता है. Core is primarily composed of heavy material, notably nickel and iron. It has earned its nickname, जिसे हम नीफे कहते हैं, nickel and iron. So let's study about the composition. Earth crust is primarily composed of rocks, which are in turn rich in mineral. Rock is essentially amalgamation of minerals, and rocks can consist of one or two types of minerals. Like we have metallic and non-metallic. मेटालिक में आपका आयरन, कॉपर, गोल्ड हो गया. नॉन मेटालिक में आपका जिप्सम और मीका हो गया. फीचर्स ऑफ रॉक्स. सो वी हैव एग्रीगेट ऑफ टू और मोर मिनरल, राइट, कंटेन ऑर्गेनिक रिमेन्स, डू नॉट हैव स्पेशल केमिकल कंपोजिशन. नाउ लेट्स स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ रॉक्स. वी हैव इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, राइट, मेटामॉर्फिक रॉक. सो फर्स्ट इज इग्नियस रॉक. ठीक है, इग्नियस रॉक की हम बात करते हैं. पहला इग्नियस रॉक है, विच इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव इग्नियस रॉक. इग्नियस मीन्स अ लैटिन वर्ड जिसका मतलब है फायर, विच ओरिजिनेट फ्रॉम सॉलिडिफिकेशन ऑफ मॉल्टन सब्सटेंसेस, जिसे हम क्या कहते हैं, मैग्मा कहते हैं. इट इज कंसिडर्ड प्राइमरी रॉक. इंटरनल प्रेशर एंड हीट विद इन दैट कॉजेज रॉक टू मेल्ट इन लिक्विड स्टेट, राइट. अपॉन कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन, igneous formed rock constitute earth crust. ठीक है, वो डिपेंडिंग अपॉन द सॉलिडिफिकेशन वी हैव एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, जिसमें जो लावा है वो कूल करता है. इंट्रूसिव रॉक में क्या होता है, एक डीप बिलो द सरफेस, इट इज प्लूटोनिक रॉक विच कूल स्लोली, जिससे क्या होता है आपका लार्जर मिनरल क्या होते हैं आपके गेन करते हैं. देन वी हैव सेडिमेंट्री रॉक. सो लेट्स स्टडी अबाउट सेडिमेंट्री रॉक. इसमें क्या होता है कि जो आपके सेडिमेंट्स हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं, एंड थ्रू डिसइंटीग्रेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन व्हाट हैपन, एक्सटर्नल फोर्सेस जैसे आपकी वेदरिंग हो गया, इरोजन हो गया, डिग्रेडेशन हो गया, ये इस पे एक्ट करती है, राइट. दीज रॉक्स आर ऑफ्टन स्ट्रैटिफाइड रिटेनिंग लेयर्स ऑफ डिपॉजिट. सेडिमेंट्री रॉक कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड अपॉन देयर स्ट्रक्चर. तो कौन कौन से होते हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक. देन वी हैव मेटामॉर्फिक रॉक, जो किससे बनते हैं, इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स, राइट. ये एक रिजल्ट है जिसका टेक्सचर है और इसका एक मिनरल कॉम्पोजिशन है, वो चेंज करता है ड्यू टू एक्सट्रीम हीट एंड प्रेशर. ठीक है, डेंसर होते हैं एंड हार्डर होते हैं देन पेरेंट रॉक, जैसे आपका एंथ्रासाइट, क्वार्टजाइट एंड मीका. नाउ रॉक साइकिल. सो वी कैन से रॉक्स आर नॉट स्टैटिक, दे अंडरगो कंटिन्यूअस ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. प्राइमरी रॉक जैसे आपकी इग्नियस रॉक हो गई, राइज किसको देता है, सेडिमेंट्री रॉक, जब हम उसको फ्रेगमेंट करते हैं, राइट. और ड्यू टू हीट एंड प्रेशर वो किसमें चेंज आता है, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक.
Now, uses of rocks. Hard rock are used in construction of dams, canals, pavement. Granite igneous rock है जिसको हम यूटिलाइज करते हैं फॉर मेकिंग हैंड क्रेडल्स. स्टोन्स को हम कार्व्ड आउट करते हैं फ्रॉम रॉक. एंड मार्बल जिसे मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं. इट इज हाईली प्राइज्ड फॉर फ्लोरिंग एंड क्राफ्टिंग आइटम्स लाइक रोलिंग पिन्स. Right? This is all in this chapter. Hope you understood. Now we will meet in next class. Thank you.